Hello everyone, I'm Priyanka Shah and welcome to my YouTube channel Mathlite. In this video, we'll continue solving Test Yourself from chapter Area and Perimeter of Plane Figures. So starting with question number 18. A metal wire when bent in the form of an equilateral triangle of largest area encloses an area of 484 root 3 square centimeter. If the same wire is bent into the form of a circle of largest area, find the area of the circle. बहुत ही easy है students. There is a wire and using the wire first we are forming an equilateral triangle and then a circle. So there is a wire which has some length, okay, and ये wire को bend करके equilateral triangle form करना है, okay, all sides equal, equilateral triangle form करना है. This equilateral triangle should have the largest possible area. What do you mean by largest possible area? ये पूरा का पूरा वायर यूज करना है to form the triangle. Okay, so there should be no overlapping. No overlapping. पूरा का पूरा वायर ट्रायंगल को फॉर्म करने में यूज करना है. Okay, so on bending the wire and forming the equilateral triangle, the area of the triangle is 484 root 3. Area is 484 root 3 square centimeter. Okay, this is what is given to us. यही सेम वायर को बेंड करके फिर सर्कल फॉर्म करना है and again the circle should have the largest possible area. It means there should be no overlapping of wire. पूरा का पूरा wire should form the border of the circle. So basically the wire is first forming the border of equilateral triangle and then the border of the circle. What is border of equilateral triangle? Perimeter. है ना, perimeter हो गया. So perimeter is nothing but the length of the wire. है ना. सेम वे यहाँ पे भी circumference जो फॉर्म होगा, border जो फॉर्म होगा, that is nothing but circumference of the circle and circumference is nothing but the length of the wire. So same length ले रहे हैं हम लोग, same wire ले रहे हैं to form both the shapes. Therefore इसका जो circumference होगा it will be equal to the perimeter of equilateral triangle. Correct? So we have this condition. We need to find out the area of the circle formed. बहुत easy है. We are given the area of the equilateral triangle. What is the formula for area of equilateral triangle? Area is root 3 by 4 into side square. Correct? Area दिया हुआ है. Area is 484 root 3. Right? So solving this I'll get side का value. मुझे side मिल जाएगा. Once I know the side of equilateral triangle, perimeter बहुत easy है. मैं इसका perimeter find out कर सकती हूँ. Perimeter will be 3 times the side. Correct? So perimeter मिल जाएगा. Why I'll find perimeter? Because perimeter is equal to the circumference of the circle and I need to know the radius of the circle because I have to find out the area. Okay, so first we'll find out the side of the equilateral triangle. Side से मुझे perimeter मिल जाएगा. Perimeter मिल गया तो circumference मिल जाएगा, दोनों equal होगा. Okay, circumference is nothing but 2 pi r. So 2 pi r will be equal to whatever value you are getting. Okay, so 2 pi r is equal to the perimeter, whatever perimeter का value you will get. Solve करके r find out करेंगे. Once you get r, area find out कर लेंगे. Area is pi r square. Okay. So first we'll find out the side, then find out the perimeter. Perimeter is equal to circumference. Circumference से हम लोग radius find out करेंगे. Radius से area find out करेंगे. Okay, so let us solve now with proper steps. For the equilateral triangle, area दिया है. Area is 484 root 3 square centimeter. Area
of equilateral triangle is root 3 by 4 into side square, right? So side square is equal to 4 into 484 into root 3 by root 3. ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, राइट? रूट थ्री कैंसिल हो गया. ओवर हियर 4 into 4 into 121, करेक्ट. 484 को मैंने 4 into 121 लिख दिया. नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स वील गेट साइड एज 2 into 2 into 11, करेक्ट. गिव रीजन ओवर हियर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स. So side will be equal to 44 centimeter. Don't forget the unit. Side मिल गया, perimeter find out करते हैं. Perimeter will be equal to 3 times the side, which is 3 times 44. So 132 हो जाएगा, correct? Centimeter, again don't forget the unit. Perimeter of the equilateral triangle will be equal to the circumference of the circle because दोनों का border का length same है. Okay, so write down, since same length of wire is used to form both the shapes, perimeter of equilateral triangle is equal to circumference of the circle. Okay, write down the full thing. Now perimeter of equilateral triangle हम लोग को मिला है 132, so write down equal to 132 centimeter. So circumference of circle 132 है. Now we'll find out the radius of the circle and then the area. Now for the circle, circumference will be 132 centimeter. That is 2 pi r is equal to 132. That is 2 into 22 upon 7 into r is equal to 132. Shift all the numbers, reciprocal हो जाएगा. So 132 into 7 upon 2 into 22. 2 66 za, 22 3 za. So r is 21 centimeter, right? Now area will be pi r squared, which is 22 upon 7 into 21 into 21. 7 3s are, so 66 into 21, so 126 and again 126, so 1386 square centimeter. Units मत भूलना students, wherever you are writing perimeter, circumference, radius, everything units मत भूलना. Okay, and final answer को box कर दो. Alright, add a statement. The area of the largest possible circle formed is 1386 square centimeter. Let's read the next question. Question number 19. The perimeter of a triangle is 450 meter and its sides are in the ratio 12:5:13. Find the area of the triangle. There is a triangle and for the triangle perimeter दिया है and sides का ratio दिया है. So there is a triangle in which sides are in the ratio 12:5:13. Now 12, 5 and 13 तो sides का value नहीं हो सकता है. Okay, it is a possibility if the factor, common factor is 1. बट यहाँ पे कुछ एक फैक्टर, कुछ एक नंबर है जो कैंसल्ड आउट है बिकॉज रेशियो का बात हो रहा है. ओके, सो लेट्स से दैट कॉमन नंबर और कॉमन फैक्टर इज x. सो साइड्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 12x, 5x
and 13x. Okay, so 12x 5x 13x ये हो जाएगा साइड्स का वैल्यू. ओके, x फाइंड आउट करना पड़ेगा टू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच साइड. उसके लिए पेरीमीटर दिया हुआ है. पेरीमीटर विल बी सम ऑफ ऑल द थ्री साइड्स, राइट? So it will be 12x plus 5x plus 13x. It is equal to 450. Solve करेंगे, x find out करेंगे. Once you get the value of x, तो sides का value भी मिल जाएगा, right? Sides मिल जाएगा. Now you need to find out the area of the triangle. So there are two ways of solving. First one is Heron's formula. Because यहाँ पे 3 different sides है, so Heron's formula use कर सकते हैं. Area will be root of s into s minus a into s minus b into s minus c. Okay, where a, b and c are the sides and s is the semi perimeter. So सीधा perimeter को divide by 2 कर दो, semi perimeter मिल जाएगा. Okay, why follow lengthy method? सीधा perimeter को 2 से divide करो. Okay, so using the Heron's formula you can find out the area. Second method, if you notice 12, 5, 13 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है. सो दिस विल बी अ राइट एंगल ट्राइंगल. ओके, जो स्मॉलर नंबर्स है 12 and 5, ओके, दोज विल फॉर्म द साइड्स फॉर्मिंग द राइट एंगल. ओके, दोज विल बी द साइड्स फॉर्मिंग द राइट एंगल. सो एक 12x होगा, एक 5x होगा, एंड जो लॉन्गेस्ट साइड है दैट विल बी द हाइपोटेनस. ओके, so sides forming the right angle are base and height. So you can use the formula area is equal to half into base into height into 12x into 5x. जो भी तुमको यहाँ पे वैल्यू मिलेगा साइड का, ओके, वो फाइंड करके उसमें पुट करो. यू विल डायरेक्टली गेट द एरिया. ओके, सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस मेथड यू कैन यूज दिस एज वेल. फर्स्ट you need to write down, of course, that this will be a right angle triangle. Okay, so let us solve now with proper steps. For the triangle, पहले given information लिखो. So perimeter दिया है, perimeter is 450 meter. Sides का ratio दिया है, the ratio of the sides is 12:5:13. Let the common factor be x. So the sides will be 12x, 5x, 13x. Okay, so write down therefore the sides are 12x, 5x and 13x. मीटर में होगा सब, पेरीमीटर मीटर में दिया हुआ है. Now there are two ways of solving this question, students. First is prove करो कि ये right angle triangle है. And the sides forming the right angle are base and height. So I can use half into base into height wala formula, okay, to find out the area. Another method is Heron's formula. Okay, so तीनों sides find out करेंगे by finding x and then we will use Heron's formula. So x तो same method से find out करेंगे, but first we'll show that this is a right angle triangle. Okay, so I'll show you both the ways. If you are using Heron's formula, fast forward the video. Okay, so over here in the triangle, shorter sides कौन सा है, सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा है, 13x. तो 13x को भूल जाओ, ये दो साइड कंसिडर करो, दोनों का स्क्वायर लेके ऐड करो. ओके, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विल बी 12x का स्क्वायर plus 5x का square. That will be 144x square plus 25x square. That will be 169x square. Mark this as 1. Now consider the longer side. So that is 13x. That will give 169x square. Okay. So from 1 and 2 we can say that a square plus b square is equal to c square.
right? Therefore this is a right angle triangle. So therefore the triangle is right angled, where A and B form base and height. ओके, सो A एंड B का वैल्यूज मिल गया तो हम लोग इजीली एरिया का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ओके, तो उसके लिए पहले x फाइंड आउट करना पड़ेगा. ऑलराइट, सो नाउ वील फाइंड आउट x. x के लिए पेरीमीटर दिया हुआ है. पेरीमीटर इज sum of all the three sides. So 450 will be 12x plus 5x plus 13x. So 450 will be 17 plus 13, 30x. So 450 by 30, 3 15s are, so x will be 15. तीनों साइड्स फाइंड आउट करेंगे. ओके, सो यहाँ पे तो तीनों रिक्वायर्ड ही नहीं है. वी नो वी नीड टू फाइंड आउट ओनली बेस एंड हाइट. सो a will be 12 into 15 which is 180 meter, and b will be 5 into 15 which is 75 meter. So area of triangle will be half into a into b, which is half into 180 into 75. 90 into 75 find out करो. 75 into 9, 9 5s are 45, 9 7s are 63 plus 4 67, 6 7 5 and 0 है. स्क्वायर मीटर, बॉक्स कर दो आंसर को, डोंट फॉरगेट द यूनिट. सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 6750 स्क्वायर मीटर. Now I'll show you the other method, Heron's formula. We need to find out all the three sides. So for that we are given perimeter. Perimeter is sum of all the three sides. So 450 perimeter है. A is 12x, B is 5x, C is 13x. So 450, 17 plus 13, 30 हो जाएगा. So 450 divided by 30. So x will be 15. Okay, x मिल गया. We'll get all the three sides. So a will be 12 into 15, 180. b will be 5 into 15, 75. And c will be 13 into 15, 195. Okay, don't forget the units. तीनों साइड्स मिल गया. हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करेंगे, बट पहले सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. सो यू कैन यूज नॉर्मल मेथड ऑल्सो, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, बट इंस्टेड पेरीमीटर को ही सीधा डिवाइड बाई 2 कर दो. 450 डिवाइडेड बाई 2, सो दैट विल गिव 225 मीटर. एरिया ऑफ द ट्रायंगल, डोंट यूज शॉर्ट फॉर्म्स. ओके, it will be root of s into s minus a into s minus b into s minus c. So that will be 225 into 225 minus 180 into 225 minus 75 into 225 minus 195. Okay. So 225 into 225 minus 180, 45 हो जाएगा. Alright, and 225 minus 75, that will be 150, and 225 minus 195, that will be 30. Okay, so इसको मल्टीप्लाई मत करो, फैक्टराइज कर लो. ओके, 225 का स्क्वायर रूट तो 15 होगा. ऑलराइट, सो इसको एज इट इज रखते हैं. ट्राई टू गेट परफेक्ट स्क्वायर्स ओवर हियर. सो ओवर हियर 45 विल बी 9 into 5. ओके, 150 भी स्प्लिट कर दो. 5
into 150 को स्प्लिट कर देते हैं, so that will be 30 into 5, right? 30 into 5 into 30. So I'll show you once again. 225 as it is, 45 को 9 into 5 लिखा, 150 को 5 into 30, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी एक 30 है. ओके, सो 2 5 है, 2 30 है, एंड ये दोनों का स्क्वायर रूट तो हम लोग को पता है. सो 15 into 3 into 5 into 30, correct? Multiply the numbers. So over here, 15 into 15, 225, 225 into 30. So that will give 3 5s are 15, 6 plus 1 7, and 6 and 0, 6750 square meter. Box कर दो आंसर को. All right, write down the final statement. The area of the triangle is 6750 square meter. Next question, question number 20. A triangle and a parallelogram have the same base and the same area. If the sides of the triangle are 26 centimeter, 28 centimeter, and 30 centimeter, and the parallelogram stands on the base 28 centimeter, find the height of the parallelogram. There are two figures, triangle and parallelogram. Triangle है, parallelogram है. For the triangle and parallelogram, both have same base. जो इसका base है वही इसका base है, and same area. So area भी same है दोनों का. If the sides of the triangle are 26, 28, 30, and the parallelogram stands on the base 28 centimeter. Parallelogram का base दिया है, it is 28. Okay. So इसका भी base 28 ले लेंगे, and remaining two sides 26 and 30. 26, 28, 30 दिया हुआ है. Okay. So we need to find out the height of the parallelogram. How will you find out the height of the parallelogram? Area use करके. Area of parallelogram is base into height. Be very thorough with formulae students. बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए formulae. So सारा formulae एक बार revise करो, learn करो, and then start with the solutions. So over here, area is base into height. Base दिया हुआ है, area मेरे पास नहीं है. Without area I cannot find out the height. Height find out करना है. So area भी find out करना पड़ेगा. How will we find out area? I am told that area of triangle and parallelogram is same. So triangle का area find out करेंगे. Triangle का area I can find out using Heron's formula because I know all the three sides. So area will be root of s into s minus a into s minus b into s minus c, where a, b and c are the three sides. Okay. So a, b और c का वैल्यू पता है. S find out करना पड़ेगा. S is semi perimeter, that is sum of all the three sides divided by 2. So S find out करेंगे, A, B and C का values put करेंगे, and we'll find out the area of the triangle. एक बार area मिल गया तो it is equal to area of the parallelogram. So I'll get this as well. Once I get area, I know the base, I can find out the height. Okay. So let us solve now with proper steps. First we'll consider the triangle. क्योंकि triangle का area find out करेंगे तो area of parallelogram मिल जाएगा. Area of both the figures is same. So for the triangle, we know the sides 26, 28 and 30. All the three sides are different, so Heron's formula use करेंगे. So first we'll find out semi-perimeter. So that will be 26 plus 28 plus 30 divided by 2. So that will give 84. So that will be 42 centimeter. Semi-perimeter भी मिल गया. अब area find out करते हैं. Area will be root of s into s minus a into s minus b into s minus c. So that will be root of 42
into 42 minus 26 into 42 minus 28 into 42 minus 30. Okay, so that will be 42 into 16 into 14 into 12, right? So स्प्लिट करो, पहले फैक्टराइज करो. ओके, सो डोंट मल्टीप्लाई दीज नंबर्स डायरेक्टली, और बड़ा नंबर मिल जाएगा. सो दिस विल बी 6 into 7 42, राइट? सो 6 is 2 3s and 7. 16 तो परफेक्ट स्क्वायर है तो उसको एज इट इज रखते हैं. ओके, कीप दिस एज इट इज. 14 और 12 को फैक्टराइज करते हैं. सो 14 विल बी 2 into 7 and 12 विल बी 3 4s. सो 3 and 4 को एज इट इज रखते हैं, 16 को एज इट इज रखते हैं. सो आई रिपीट, 42 को मैंने फैक्टराइज किया, 2 into 3 into 7 मिला. ओके, देन 16 को एज इट इज रखा है. 14 will be 2 into 7 and 12 is 3 into 4. 4 को एज इट इज रखा है, अगेन परफेक्ट स्क्वायर है. सो ये दो तो परफेक्ट स्क्वायर है, इसको छोड़ दो. यहाँ पे दो दो का ग्रुप बनाओ. ओके, सो 2 into 2, 3 into 3 and 7 into 7. Okay, and into 4 into 16. So this will give 2 into 3 into 7 into 4 का square root 2, 16 का square root 4. Now multiply the numbers. So 2 3s are 6, 6 7s are 42, 42 into 8. 8 2s are 16 and 8 4s are 32 plus 1 33. 336 square centimeter area मिल गया ट्रायंगल का. Now we'll find out the height of the parallelogram, because area of triangle is equal to area of parallelogram. So write down, area of triangle is equal to, no short form students, you have to write down full words. So area of triangle is equal to area of parallelogram. सो इसमें चल जाएगा पैरेललोग्राम, यू कैन यूज दिस, बट ट्रायंगल के लिए पूरा वर्ड लिखो. इट विल बी इक्वल टू 336 स्क्वायर सेंटीमीटर. इट इज गिवन टू अस. सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल गया. नाउ राइट डाउन, फॉर द पैरेललोग्राम वी हैव द बेस, इट इज 28 सेंटीमीटर. एरिया इज 336 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो हाइट फाइंड आउट करना है. Area is base into height, that is 336 is equal to 28 into h. 336 divided by 28 is equal to h. Let's find out. 2 14s are 2 16s are 32 and 2 8s are 16. 2 7s are 2 8s are 16, 2 4s are 7 12s are. सो 12 सेंटीमीटर. बॉक्स कर दो आंसर को, यूनिट लिखो. राइट डाउन द फाइनल स्टेटमेंट. द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम इज 12 सेंटीमीटर.